एकदम मस्त सवाल है ये प्रोबेबिलिटी पे। एडवांस्ड 2020 का क्वेश्चन। टू फेयर डाइस ईच विथ फेसेस नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 आर rolled together. Important one, together, and the sum of the numbers on the faces is observed. ये हुआ एक्सपेरिमेंट। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड till the sum is either a prime number, ये देखो, ये आउटपुट, और अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आउटपुट कौन सा, सम। सम इज प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। डियर, सबसे पहले लेट अस बिगिन दिस। इसको सेटअप करते हैं, इवेंट्स में सेटअप कर देते हैं। लेट से प्राइम नंबर का सेट क्या बनेगा सम में? 1 + 1 2, या 3 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7 8 9 10 11 12 नहीं, खत्म। ये हुआ प्राइम्स। सम एज ए प्राइम, सम एज प्राइम, ये एक इवेंट हो गया। अच्छा, और क्या? परफेक्ट स्क्वायर। क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है सम में? 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 1 ले लें। सम 1 नहीं हो सकता। तो सम एज ए परफेक्ट स्क्वायर कैन बी हैविंग ईदर 2 स्क्वायर 4 या 3 स्क्वायर 9। केवल दो आउटपुट। ये हुआ सम एज परफेक्ट स्क्वायर। These can be the possible outputs. अब नेक्स्ट कंडीशन, सपोज द सम। अब ये ध्यान से पढ़ो, सपोज द सम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्न्स आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी इवेंट बी पहले हो रहा है, बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर, मतलब इवेंट बी हैपेंस बिफोर इवेंट ए। Suppose the sum turns out to be a perfect square before it turns out to be prime. मतलब कि ये टाइम के रिस्पेक्ट पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइमलाइन लगा रहा है इधर? नहीं, टाइमलाइन नहीं लगा रहा है। इवेंट कौन सा पहले ऑकर कर रहा है उसका प्रोबेबिलिटी काउंट करना होगा। अब इवेंट क्या बन रहा है फिर यहां पे? द इवेंट इज, लेट्स से एक इवेंट E1 डिफाइन करते हैं, और इवेंट E1 क्या कह रहा है? द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी बी ऑकर्स बिफोर व्हाट? बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर, यानी बिफोर इवेंट ए। इसको अगर इवेंट E1 डिफाइन किया जाए तो क्या होगा? ये कैसे ऑकर करेगा? बी ऑकर्स बिफोर ए, तो हर वक्त दो डाइस पैरेलल थ्रो किया जा रहा है, सम काउंट किया जा रहा है। तो लेट्स से B occurs before A, that means how will it occur? Probability of event E1 के लिए हमें क्या लगेगा देख लो। तो लेट्स से इवेंट B पहले हो गया, तो इवेंट B का प्रोबेबिलिटी, और इट कैन हैपन कि इवेंट B नहीं हुआ, अगर इवेंट A हो जाए तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या? B occurs before A means A cannot occur, and let's say B also does not occur. Now इसका मतलब है एक थर्ड रिक्वायरमेंट सेट C is such A does not happen and B also does not happen. मतलब the sum is not, the sum is neither prime nor perfect square। ये दोनों भी तो नहीं हो सकता यार। जैसे मान के चलो आपका 8 आ गया, सम एज 8, तो वो प्राइम भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, और ये हो ही सकता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब है, अब इवेंट E1 पे फिर से ध्यान देते हैं। सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट इज ए प्राइम नंबर। तो लेट्स से इट ऑकर्ड एज ए परफेक्ट स्क्वायर, or it did not occur as a perfect square, and also it did not occur as a prime. Then event C happened, and along with that then event B happened. Now this is a possible outcome of event E1, experiment E1. B occurred before A occurred. Or what can happen?
this event C occurs, then again event C occurs and then event B occurs. अब 3 बार ट्राई हो गया, यहां एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ, एक बार रोल फेंके गए, यहां 2 बार फेंके गए, यहां 3 बार फेंके गए, एंड दिस कैन कंटिन्यू, एंड दिस कैन कंटिन्यू इंफिनिटली. ये हुआ इवेंट E1, सिर्फ इवेंट E1. Now, if P is the probability that this perfect square is an odd number, एक नया requirement, event E2 define करो, क्या आउटकम होगा? That the perfect square is odd. The sum is, पहली बात, perfect square and odd. देख लो, perfect square B में है, odd केवल 9 है, मतलब आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट सिर्फ 9 होना चाहिए. यानी P of E2 is as good as counting probability of 9. But कंडीशन है, इसके गिवन पे कंडीशन है, पहले ये हो रहा है और उसके बेसिस पे ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होगा. मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि the sum turns out to be a perfect square before it turns out to be a prime number. Suppose this happens, मतलब given that event E1 occurs, given that if P is the probability that this perfect square is an odd number, मतलब probability of 9 या probability of E2, probability of E2, find P probability of this event that the sum is a perfect square and is an odd, given that E1 has occurred, ये value P है. P of E2 by E1, this is equal to P. अब P of E2 by E1 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? P of E2 intersection E1 by probability of E1. ये एक टोटल प्रोबेबिलिटी है और ये एक सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर टोटल प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर पे, ये कैलकुलेट करना है. Now let us go forward to solving this question and calculating this question. I will wrap this off. You can get back to the images of this question even later on by reversing on the video. अब कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट किया जाए देखो. क्या क्या इवेंट्स रिक्वायर्ड है? इवेंट E1 डिनोमिनेटर में चाहिए और इसका मतलब है इवेंट B, इवेंट C का कैलकुलेशन करना होगा. तो इवेंट C के लिए इवेंट A का रिक्वायरमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A से स्टार्ट करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, सम 2, तब कैसे हो सकता है? 1 and 1, मतलब 1 by 36 प्लस सम 3 कैसे हो सकता है? 1, 2, 2, 1 एंड दैट्स ऑल, दैट इज 2 by 36 प्लस 5 कैसे हो सकता है? 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. 4 तरीके से हो सकता है. by 36, 36 क्यों? 6 क्रॉस 6 आउटकम्स है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 1, 5, ऐसे 36 आउटकम्स है. और ये हुआ स्कोर 5. अब स्कोर 7, 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3, खत्म. मतलब 6, फिर से एक बार, 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3. तो 6 by 36 आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 11, 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6, 4 प्लस 7 से नहीं हो सकता. 5 प्लस 6, 6 प्लस 5, यानी 2 by 36. टोटल कितना है? 3 plus 4, 7, 13, 15. 15 by 36 is probability of event A. अब probability of event B, the score is 4, sum of the scores is 4. 4 कैसे हो सकता है? 1, 3, 3, 1 या फिर 2, 2, that's all. मतलब 3 by 36. 9 कैसे आ सकता है? तो let's begin with 3 and 6. तो 2, 7 not possible. 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4 and that's all. मतलब 4 possible outcomes हैं. 4 by 36. So in this case we have how many exact outputs? We have 7 by 36, 7 outputs, and 7 by 36 is the probability for event B.
and event B is that the sum is a perfect square. Till here, the question is not at all tough. The question is not tough. It is calculated. Now see this. Probability of event C, which is equal to probability of event A not occurring and probability of event B not occurring. It is as good as 1 minus probability of A minus probability of event B, because A and B are independent events. They can be solved separately. So this is equal to how much? A plus B means 15 plus 7, 22 by 36. That means 1 minus 22 by 36. And that makes a 14 by 36 probability for event of C. Now using this, if we go for solving probability of E1, P of E1. I hope you remember what is E1. The E1 is that the sum turns out to be a perfect square before it turns out to be a prime. So we go for probability of B, which is there 7 by 36 plus P of C, that is 14 by 36 dot P of B is 7 by 36 plus. Next, P of C 2 times, therefore 14 by 36 whole square into 7 by 36 plus. Next times 14 by 36 whole cube, because failure can occur 3 times next. Out of for a total 4 trials, and the 4th trial can result into a success, and so on. This is going to go till infinity, never ending process. This is the given event, base event, priori event required, and that means P of E2 has to be now calculated separately. And what is P of E2? P of E2 is simply the sum turns out to be 9. It's a perfect square and odd. There is only one possibility, and that is 9. Probability of E2 as probability of 9 is to be calculated. How can we calculate that? The sum turns out to be 9 in how many ways? The sum turns out to be 9 in 4 by 36 ways, like 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4, only 4 times out of 36 times. This is the score of 9 occurring as a probability. So therefore, let's say 4 by 36 occurs right at the beginning, or neither a perfect square nor a prime number comes. That means event C happens. Now 14 by 36 is when neither a perfect square nor a prime is occurring. And next what comes up is a score of 9 again as a required event of probability, required probability of event E2, and then again I have a 4 by 36. Then I again fail 2 times, let's say 14 by 36 whole square, this type of a thing, and I get a score of 9 as a 4 by 36. Then I fail 3 times, 14 by 36 whole cube into 4 by 36. Till now this is obviously going to go till infinity, and these are the required probabilities. Now see this. E2 intersection E1. Sum is perfect square and odd is a subset of sum is a perfect square before it is a prime. Therefore, this is as good as, the numerator is as good as the probability of E2 by probability of E1. This is what we are going to calculate, and here is the answer. The probability P that we are going to calculate as a probability of E2 by probability of E1 is simply, now you see both of them are infinite GP series. The sum of an infinite GP is always A by 1 minus R. I hope you remember. If the series is A plus AR plus AR square plus AR cube and so on till infinity, this A by 1 minus R turns out as the sum. According to that, the first series, that is E2, is going to have the first term as 4 by 36 by 1 minus common ratio. Common ratio for both the series, common ratio for this is 14 by 36. Common ratio for this is also 14 by 36 as an infinite GP series. So 1 minus R remains same for both the series. Now 4 by 36 as the first term and 7 by 36 as the second term. It generates 4 by 7 as a direct answer of this, and this is the answer of this question. 4 by 7 is the probability value for P.
Now the question is asking for 14p value. The question is asking for 14p. Therefore, 14 into p is going to be 14 into 4 by 7, and that is an 8. And this is the answer to this question. Thank you for your patience. See you in the next discussion.